Jai Hind, good evening. Please confirm that I'm audible just by giving a signal. Thanks for the confirmation. Welcome, all of you, those who are attending our session. Let us take 2, 3 minutes more for more people to join in. Okay, fine. I will start. We'll allow people to join in as and when they keep coming. So, a few points of advice from my side before I start answering your questions. You see, when the selection system started working, there were no coaching academies at all. And some of the aspirants who attended the first ever SSP, they got selected. And they were selected primarily because they met the criteria of being selected.
The selection criteria today are exactly the same as they were when the first SSB ever took place. That means in April 2024, a candidate hypothetically attended the first ever SSB should get selected now. Now, what has happened since then is that a large number of coaching academies have come up. They are trying to do, or rather, they're trying to meet the needs of the society as well as they can. However, in my personal view, they have together done considerable disservice to you aspirants. The primary problem is that they have brought the focus of you aspirants onto the SSB process rather than overall personality development. This is a great disservice. That is why I keep getting questions about, how to speak in PPDT, how to maintain eye contact, should I use hand gestures, then Balli Patta, then some tips of story writing, SRT, Balli Patta, Ghat Bandha, and all those things. You see, in case an individual gains great expertise in all this knowledge, that is about the SSB process, the maximum increment in his or her chances of selection the person can make is not more than 5%. It is going to be less than that. Max is 5%. So 95% of your chances are dependent upon what overall your competence is. I will give an example to explain these things to you better. One student joined up for my guidance program, and I think he had about 1 month's time. And this boy was very bright, and his all-round competence was good. He was physically fit. Things were pretty good overall. He says, "Sir, I have no idea about SSB and all that, so I'm feeling very, very nervous and unsure of myself." And then I told him in the first interaction itself that you will have no problem at all. The tips which I am giving you, they will help you get an idea about the SSB process. But even if you had not taken my guidance, you would have got recommended. And in a matter of 1 month that he was with me, we hardly had any major interactions. And this boy stood first in the merit. Fine. So this is an absolute clear evidence as to what is the significance of overall competence vis-a-vis knowledge of the SSB process. Fine. Overall, having worked in the selection system and now having been guiding students for almost 10 years, I have realized that if you boys and girls focus on the following four things, you can increase your chances of selection greatly. First thing for a student is academic competence. Give it a weightage of approximately 35%. In case you are a worker, your effectiveness at your workplace replaces academic competence and it gets the weightage of 35%. Next comes your communication skills. Allocate it a weightage of approximately 30%. So these two qualities cater for 65%. Next comes your physical fitness. Allocate it a weightage of 20%. So together all these three qualities make 85%. Remaining 15% allocated the weightage to your general awareness. This takes care of 100%. So if you improve upon these four qualities of yours, then you will be increasing your chances of getting selected greatly. And that is what you people should be doing rather than focusing on Balli Patta and things like that, practicing psychology tests, CIQ 1, 2, 3, and all that. Fine. So with this as a background, I am ready to take on your questions. So Yogita, let's have the first question.
Yes, sir. Sir, one person is asking, I'm not doing any job. I'm not even getting placed anywhere. There might be some alternate way I'm thinking about it, but sir, please clarify. You can. Thing is that, beta, I understand your position. The employment situation is very bad in the country, and for qualified people, graduates and above, postgraduates, the unemployment situation is extremely bad. It is worse than ever we've had in our recent memory. So, but the thing is that you should keep trying. Nobody is going to hold it against you so long as you are making sincere effort and in searching for job, as also enhancing your overall competence to make yourself suitable to be hired. This is what you should be doing, and do not bother about the results, because results are not in our hands. Only our effort is in our hands. Fine, beta. That is what you should do. God bless. Sir, Atharva Deshmukh is asking, sir, do looks and expressions matter during assist? यहाँ देखो, ये नो फ्रिल्स एकेडमी है यार, हम इन चीजों की बात नहीं करते, ठीक है ना? डोंट बॉदर, फोकस ऑन योर ओवरऑल कॉम्पिटेंस, द फोर थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, डोंट बॉदर फॉर ऑल, फॉरगेट इट. थैंक यू. Sir, Anand Kesar is asking, sir, how should I improve speaking skills? I forget my story when others are looking at me during the group ओके. narration. प्रेशर का चक्कर है, स्टेज फ्राइट वाला चक्कर है. हमारा एक वीडियो देखना, स्टेज फ्राइट एंड प्रेजेंटेशन ना, उसके ऊपर शलिका राणा हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने बनाया हुआ है. शी हैज टॉक्ड अबाउट इट इन दैट. You can read our essay on the subject in our book. Good advice for you, practical advice would be that create groups in which you can practice these things among your friends. If such things are not possible to do in practically, then joining our guidance program would be a worthwhile idea, because over a period of time you should be able to improve upon these. Fine. Nothing can happen suddenly. It is going to take time. So this is what it is. Yeah, thank you. Sir, Akhil Singh is asking, sir, I have done my graduation in 2022. Now I am just preparing for CDS and AFCAT without doing any job. इसका negative impact पड़ेगा क्या इंटरव्यू में? नहीं, देखिए है, क्योंकि ये irresponsible conduct है आपका. You are in a position to earn and contribute to your family as also the society, but you are not doing that. So you should not be doing this. ठीक है? So this is my advice. You should start working. बाकी, this is a general advice. Your individual situation may be best known to you. You can formulate your decision, or you can join my program. So once I know you well enough, I can render you a more specific advice, suited exactly to your life. Fine. So that's what it is. The general advice is कि काम करना चाहिए. Thank you. Sir, Karan Vaidya is asking, sir, interview looks like as if I am speaking in a random way. How to speak in an organized way in an interview? Uh, how to speak in an organized manner. You see, thing is that it has to do with how your software functions. If you are organized in life, if you plan your day systematically, or if you start answering questions, you answer them in a systematic manner. So that means you have an organized outlook towards life. And you see, it is not possible that a person is organized in one facet of his life and disorganized in other facets, because the things will quality will permeate. So overall, try and get organized in life. अपना रूम कमरा जहां रहते हो उसको ही ऑर्गेनाइज करो, अपने डे को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करो, जो क्वेश्चंस आंसर्स लिखते हो स्कूल कॉलेज के जो भी है उनको एक सिस्टमैटिक अप्रोच में आंसर करना शुरू करो. Once you start doing that,
then when you talk in a GD or you deliver a lecture or you write an answer, the tendency would be to give it an organized outlook. You will have some sense of chronology and system in your life. That's what it will reflect. तो ये isolation नहीं हो सकता है चीज ना. That's what my advice is. Okay, thank you. Sir, Harsh is asking, sir, I have appeared for 12th just recently. Should I prepare for NDA to 2024 means September, or should I focus on my JE? Prime focus keep on JE. If you are overall competent, this clearing this NDA exam will not be a big deal. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आ जाओ हमारे पास, join our program. ठीक है ना? I'll be able to give you specific guidelines, but general guideline is this. कोई टेंशन की बात नहीं है, ये 15-20 दिन में हो जाता काम एनडीए वाला. If overall competence is good enough. I myself had done it in around that much. Fine. क्योंकि क्या एनडीए का एग्जाम है यार. अंग्रेजी है, साइंस, मैथ्स है. वो तो अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आपकी कैपेबिलिटी ठीक है तो ठीक ठाक ही होगा. द ओनली इशू व्हिच नीड्स प्रिपरेशन इज जनरल नॉलेज. तो वो आप कर सकते हो. कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या व्हाटएवर source you can go and do that. That's not going to be a big deal. Fine. Or SSB, there's nothing like SSB preparation. As I said, 4 things आपके अगर ठीक ठाक है, आपकी बात बन जाएगी. Thank you. Sir, Surendra Pal is asking, sir, I am a serving personnel, so how to improve communication skills? सिंपल आंसर तो ये, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओ. हमारे पास जो आए हैं उनका ग्रेट इंप्रूवमेंट हुआ है. बट थिंग इज दैट उसके लिए तुमको टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा. You will have to be part of our, WhatsApp groups and Zoom sessions. वो आपको attend करने पड़ेंगे and you will have to take part in them and prepare for your GK, gradually speak English and written work English का हमें देना पड़ेगा, हम आपसे मांगेंगे. तो एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, बट आपको जो है एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा. ठीक है ना? थैंक यू सुरेंद्र. Sir, Mayank Rathod is asking, sir, some people say that your story must be at least 12 to 13 line each. Is it mandatory? देखो यार, some people say मैं बहुत वो हूँ. I give no credence to this some people thing. बकवास करते हैं लोग. ठीक है, तो don't bother for that. So long as when you see a picture, you have identified as to what issue is there in the picture, which the main character should resolve. If that is being done, then it is good enough. अब उसमें 12-13 लाइन लिखो या 6-7 लाइन लिखो. My advice is 7-8 lines are good enough. Keep finishing off your stories well inside 4 minutes. It's a good idea. सोचने में एडिटिंग मत करो, आराम से सोचो, प्लान बनाओ, क्रिस्टलाइज करो पूरे थॉट्स को, ओनली देन गो ऑन एंड राइट शॉर्ट स्टफ. ठीक है ना? इज व्हाट 12-13 लाइन में चक्कर मत पड़ो. या थैंक यू. Sir, do Army or Air Force select candidates who have done better in CDS and AFCAT only after graduation? नहीं, I have not understood. Means those who clear written exams only they get recommended or what? नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं तो फिर हम कह ही देते कि रिटन एग्जाम के दूसरे वाले आओ ही मत. It is not like that. But definitely a person who can clear these written exams with good marks has what? He is providing concrete evidence to the selectors that his overall academic competence is of an acceptable level. So that is why his or her chances of getting selected should be little better than somebody who can't clear these exams. I mean, that's a pretty common sense stuff. ये बात है, बाकी कोई बायसेस वायसेस नहीं होती है. रिटर्न वाले कोई पास करना है. Fine. Yeah, that's it. Thank you. Sir, Alan is asking, sir, I am 21 years old. I have passed my BSc in 2023. I have a gap till 2024. Now, what should I do? Should I pursue MCA or not? And my SSB is on 20th May. अभी तो तू झटके में तो क्या कर लेगा.
You should have started working, and that is my advice to you. Is rather than just preparing for this sarkari imtihan and all that, which in which you are overall wasting a lot of your time. Don't do that. Start working. Otherwise, I mean, masters करना वो दोनों दोनों option है. Sensible decision you will have to take in consultation with your family, or you can join my program, and then I will be able to advise you in your very specific case, understanding your background and I mean conditions जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में. ठीक है? Yeah, thank you. So Gaurav Roy is asking, sir, what do you mean by work competence? Work competence. Hmm. वर्क कॉम्पिटेंस का मतलब सिंपल सी बात है यार. आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें आप कॉम्पिटेंट हो, अच्छा परफॉर्मर हो. जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो अगर आप अपनी एकेडमिक्स ठीक ठाक समझते हैं, आप कोई ट्रबल क्रिएटर नहीं है, and I mean teachers find you generally good, and so also your colleagues. So same thing is there at the workplace. I mean in normal course, a student who is a good student should be a good worker also. That is what it is. कोई ऐसी डेफिनेशन कोई स्पेसिफिक ये नहीं है. मतलब काम करने में अच्छा होना चाहिए और क्या. अच्छा तो कोई ट्रबल क्रिएटर नहीं है. बाकी तो फिर ग्रेडेशंस आ जाएंगे. यू कैन गो एंड रीड माय सेल्फ डिस्क्रिप्शन. वेबसाइट में डाला हुआ है वो Yes. सेल्फ डिस्क्रिप्शन का. यू कैन रीड द एसे ऑन सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आई हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग्स देयर. वीडियो भी बने. वीडियो भी है उसके ऊपर. अच्छा, you can see that video, you will get an idea. You can take our book. It will give you an idea about not only this but various other things. So then you can plan. ठीक है? Yeah. Sir, Deepthi is asking, sir, I have my SSB on 22nd May. I don't have any idea about SSB. Sir, I have not joined any coaching class so far. Should I go for that SSB or not? नहीं, अगर आपका ये 4 चीज जो मैंने बोला उसमें आप ठीक ठाक हो तो जाइए, और अगर नहीं है, आपको डाउट है तो मत जाइए. और डाउट भी है और प्रिपरेशन की एडिक्वेसी का भी दोनों डाउट शाउट है. रिटन एग्जाम वाली एंट्री नहीं है, तो फिर हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक एडवाइस एंड हेल्प यू ग्रूम ओवरऑल. ठीक है ना दीप्ति जी? या थैंक यू. Prax is asking, sir, I have my SSB on 6th of May. I haven't done any special preparation for SSB. Just know about the test, what all is conducted. Sir, I don't have a job. Now I am feeling nervous, sir. What to do? Nervous feel karna is okay. That when I play a match now that I'm 64, I also feel nervous because I mean uncertainty is there in a match. Ke harunga, jeetunga, how will I perform and all that. So there's nothing wrong in that. That's okay. That's very normal. But as I said, if in the four thing qualities that I talked about, if you are fairly good in these things, then don't get bothered. Your chances of selection would be good. बाकी हमारे वीडियो शीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा. हमारी बुक ले लीजिए, you'll get greater clarity. फाइन. और मिस इन्फॉर्मेशन से आप बचेंगे. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है वेबसाइट. ठीक. थैंक यू. Sir, Sharnak Kulkarni is asking, sir, what if IO asked me, if you are so passionate about joining services, why didn't you join as a soldier? इसका आंसर क्या दे? आंसर तो जो है वो दीजिए. मैं आपका क्या बोल सकता हूँ? I would never have gone and joined as a soldier. But my answer simply would have been that I don't consider myself, to be joining as a soldier. I look at first class officer rank. So either I will join as an officer or something which is matching of that caliber. Soldier वाला मैं क्यों जाऊंगा मैं, जब मेरा caliber वो उससे higher है. ठीक है ना? That's it. That would have been my answer. I mean, you will have to pick your answer. Thank you. Sir, I have never applied for CDS or AFCAT exams before. Karji is asking, sir, will this impact my chance of selection? ने क्या नहीं किया है? उसने अपीयर ही नहीं किया ये CDS AFCAT वाले बार. नहीं किया तो जो भी रीजन है बता देना उसमें. देखो यार, अफेक्ट होने का कोई चक्कर नहीं है. डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट दिस छवि वबी बिजनेस ना.
छवि के लिए तो एक ही आदमी हिंदुस्तान में बहुत है, 10 साल से आप देख रहे हो उसको, छवि में ही लगाया, असलियत तो कुछ सब फ्रॉड है मामला, तो अभी फ्रॉड खुल गया है। तो डोंट गेट इनटू ऑल, जो है वो बता दीजिए ऑनेस्टली, ठीक? बिकॉज बीइंग डिसऑनेस्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बीइंग ट्रूथफुल विल बी हेल्पफुल, ठीक है? दैट्स व्हाट यू शुड डू। थैंक यू। Okay. Sir, one person is asking, sir, one interview question is there. How will you carry a house on your shoulder? Uh, and move it from one place to another? ऐसे हाउस house कुछ भी tricky question. रहने I, दो. I don't have answers to such question. मैं तो घर को नहीं उठा के ले सकता है. That is why it is called immovable asset. तो इमूवेबल एसेट को अगर कंधे पे उठा के ले जा सकते होते तो उसको मूवेबल एसेट बोलते हैं. और इट वुड हैव बीन यू नो समथिंग हाउस, लाइक इट वुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ अ टेंट और समथिंग लाइक दैट, यू नो, जिसका नींव गाड़ के वो पूरा प्रिपेयर करके बनाया गया है. हाउ कैन यू मूव इट? या, थैंक यू. And don't get bothered for such questions. I don't think anybody asks such questions. Or if somebody asks, I mean, he is just joking. Don't take it too seriously. Yeah, thank you. Gaurav Roy is asking, sir, how to prepare online for GTO task. I lack in this PGT, HGT. How to improve that? तुम आ जा, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, तेरे को सिखा देंगे कि जीटीओ कैसे सिखाया जाता है, और बाकी चीजें भी सीख जाएगा. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये सारी एक्सपर्टीज जिसके लिए आप जोर लगाते हो, जिस तरह के आपके सवाल मेरे पास आते हैं, उनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ही ओवरऑल 5% से ऊपर का है नहीं. उसमें तुम जोर लगाए जा रहे हो पूरा. तो जीटीओ पीटीओ के जिसमें तुम पढ़े हो ना चक्कर में, इट विल मेक नॉट मोर देन 1% डिफरेंस ओवरऑल. ठीक है? 4 चीजें जो मैंने बताई वो करो, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू. तुम आ जा मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में, यू विल कम टू नो हाउ इट कैन बी सॉर्टेड. Sir, one person is asking, sir, I am AFCAT में fail हो गया, but I am not a fraud person. मैं क्या? तो फ्रॉड नहीं है तो क्या बात है, फेल हो गया तो हो गया, अगली बार पास करना भाई अच्छे से प्रिपेयर करके. ठीक है? हाँ, डोंट गेट बॉदर्ड. somebody is asking something in मोदी जी also ना. हाँ, मोदी जी मैंने मोदी ignore जी किया. जीत गए तो क्या करोगे? एज आई एम अ मुस्लिम, आई एम वेरी स्कैर्ड. I agree with you, but it is a reality. The way he is going on this anti-Muslim agenda, I mean, you can only mobilize your friends and your family and those people you know through correct information that they vote correctly. ठीक है ना? Otherwise, difficulties are there. I mean, being a Muslim today is a difficult situation in India. You're getting an unfair deal. मतलब ऑल्ट न्यूज वाला भी तो प्रतीक सिन्हा और जुबैर में से इट वाज वेरी क्लियर कि जुबैर को ही अरेस्ट किया जाएगा, एंड देयर वाज नो क्लॉज फॉर हिज अरेस्ट. ऑल बकवास. ऑफ कोर्स बकवास तो खैर कैसा रहे, आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप को बंद करके रखा है, देयर इज नो रीजन अदर देन ही कॉल्ड मोदी चौथी फेल. So it is there, beta. That's all. I can sympathize with you, but I really don't have an answer. I don't have an answer because I can only apologize on behalf of the society that we are a part of. That the what we you people had contracted by staying put in this country, thinking that this religious outlook for division of our societies into Pakistan and India was a bad idea. The current way the government is taking us, it seems to be, dishonoring of that contract. That's sad. Thank you. Can make a video for serving person or appearing. अरे भाई, मैंने एक वीडियो डाला है सर्विस एंट्री वालों के लिए. Please contact Yogita madam for the contact number given on No Frills Academy website, and she will give you that that video आपको दिखा देंगी.
आप देख सकते हो। वैसे भी अगर आप सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने कलेक्टिवली बनाया था 4-5 कैंडिडेट्स के सक्सेसफुल। ये भी सर्विंग पर्सनल है। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल। हाउ टू, अरे तुम भैया जीरो लेवल है, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तुम बातचीत कर सकते हो, टाइप करके मुझे चीज भेज सकते हो, मेरा गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। फाइन, या क्वाइट वीक इन इंग्लिश। क्वाइट वीक इन इंग्लिश तो भैया रीड मोर, राइट मोर, स्पीक मोर, और ज्वाइन आवर प्रोग्राम एंड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। एफर्ट तुमको करना पड़ेगा, गाइड तो हम कर देंगे ओरल में भी रिटन में भी, बट एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। व्हाट आर योर व्यूज ऑन अरुण गोविल? राम द क्लाउन यार। Uh, नहीं, रहता नहीं है मेरिट पे, आई गॉट नथिंग अगेंस्ट दैट, बट आई मीन इज अ यूजलेस चैप। ये तो गिमिक वैल्यू है, यू नो, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, अरुण गोविल। आई मीन इंडियन सोसाइटी वोट्स फॉर सच पीपल। हेमा मालिनी तो मैं कहता 2 बार से एमपी बनी हुई है, तो ऑफ कोर्स शी इज एब्सोल्युटली यूजलेस, बट देन दैट्स हाउ आवर सोसाइटी इज। मेरे ख्याल से गोविंदा भी जीत गया था ना इलेक्शन एक बार। अभी महाराष्ट्र में लड़ता नहीं, जीता भी था ना एक बार। हाँ, तो गोविंदा इज आल्सो एब्सोल्युटली अ यूजलेस चैप, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट इट इज। Someday Tendulkar may also fight election, so he is also an absolutely useless chap. He's been member of Rajya Sabha, he's done nothing there. For that matter, even कोई जो बोल रहा था पता नहीं क्या करेगा and all that, जो लेके बढ़िया सा taking sort of a bribe, he came and joined Rajya Sabha, that fuck all he has done. He is useless chap, Arun Govil. That's my view. Thank you. Sir, what to do in free time for rest 4 days after getting in? अरे भैया 4 days का आपका एसएसबी प्रोसेस चलता है तो उसको यूज करिए, ठीक है? Sir, I'm BTech 2022 pass out. I job as data specialist in LPA for 8 months and left, not able to prepare. Didn't clear CDS, but data cleared. Do I have a chance? Yeah, why don't you have a chance? Not to worry, not to worry. करो systematically. Be sincere in your effort. That is all. Thank you. सर होली वाला डिस्काउंट दे दो। भैया होली का तो गए जमाना हो गया। You see, I don't decide these discounts. It is my team, Yogita and my son. They take out a decision. कोई 1-2 दिन में देते हैं ना डिस्काउंट। हाँ, तो suddenly they come up with this discount. That's what they told me. Is the business thing. They said you, Col Nehru, you don't understand these things. We know it better, so they do it. हाँ। तो मेरे हाथ में नहीं है भाई। हाँ, thank you. वो तू ले ले, तू बात कर लेना, तेरे को क्या डिस्काउंट चाहिए? अजीत सिंह, यू स्पीक टू योगिता मैडम, शी इज देयर सिटिंग बिसाइड मी, शी विल कंसीडर योर दिस थिंग एंड तेरे को दे देगी। अच्छा, फेलियर इन स्कूल कॉलेज डजंट इम्पैक्ट, नहीं, इट डज इम्पैक्ट। ऐसे नहीं है, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड खराब है। रीड द स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, अजय सिंह राजपुरोहित। उसने 6 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया था, and he had some 25 backlogs or so. But then he became sincere and he worked systematically in his workplace, improved his general awareness and fitness, and he got recommended. He is an officer today. ठीक, तो पास्ट में ही हम नहीं जाते रहेंगे, पर प्रेजेंट में इंप्रूव तो करना पड़ेगा ना पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड, इन केस इट हैज बीन दैट बैड। या थैंक यू सर। आपको हिंदू विरोधी बायस रहा है बच्चे मेरी कोचिंग में, फिर मैं उनको सुनाया। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। तू बेटा तू गाइडेंस प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कर लिया, तेरा विरोधी विरोधी सब मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ? चल ठीक है। जैन सर, इफ आईओ आस्क हाउ यू स्पेंड योर डे, तो व्हाट यू फाइंड फ्रॉम, अरे यू डोंट बॉदर यार, तुम अपना बताओ ना। डोंट ट्राई टू बिकम द बाप ऑफ द असेसर, उसको करने दो अपना काम, तुम अपना बताओ जो तुम कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है? या थैंक यू। सोनल मूर्ते,
like I'm not working since then. नहीं कर रहे हो तो काम भाई करना शुरू कर लो अब. Sir, I believe SSB will not ever select person like Manekshaw legend because he was selected by Britishers. नहीं यार ऐसा नहीं है, क्वालिटी वही है. मानिक साहब was a great man. I have heard him talk twice. When I was passing out, he had come for a parade. So, but we did not have time to interact. Then, when I was doing staff college in Wellington, he addressed us, and then I had an opportunity to interact with him also. तो ये है, मैंने उनसे कुछ सवाल भी पूछा था जो मैं भूल गया हूँ अभी, पर मैंने उनसे बातचीत किया था. तो नहीं नहीं हो जाना चाहिए यार, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है. डोंट गेट वरीड. He is a person, inspirational person for the society, not just defense forces. And such people should get selected. Why not? Thank you. Because you criticize Modi, and Modi को criticize इसलिए करता हूँ based on facts. नाश कर दिया देश का. It's such a good opportunity, so much of mandate, so much he could have done. So what he has done is he's taken care of his wealth of Adani, Ambani, and few corporates. उनका 16 लाख करोड़ loans माफ किया, उनसे bribe ले लेकर काम चला रहा, अपने पार्टी में सबको रईस बना लिया. देखा है तुमने कि बाहर वाले भी करप्ट लोगों को लेके उनके केसेस राइट ऑफ कर देता है, एंड कीप्स गोइंग आफ्टर अदर्स. एंड ओवरऑल कितना वेल्थ इनइक्वालिटी का कर दिया काम. एंड प्लस यू सी, कोई एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई हेल्थ केयर का इम्प्रूवमेंट नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है उसमें भी इतना ब्राइब्स लिया गया, इतना पैसा बनाया गया है, उससे डेट इतना इंक्रीज कर दिया गया है. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीस थिंग्स इन माय वीडियोस एंड दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अगर उसमें तुम वो देखो लोगों का कमेंट जो बकवास ट्रैश लिखते हैं, गोबर भक्त, तो दे नथिंग फैक्चुअल. दे हैव टू काउंटर द आर्गुमेंट दैट आई हैव गिवन. दे जस्ट राइट आएगा तो मोदी अब की बार 400 बार. वो तो बकवास है, वो तो मोदी भी करता रहता है. मोदी हिमसेल्फ डजंट टॉक. मोदी की गारंटी है जो पता नहीं इतना बड़ा मैनिफेस्टो बनाया. I think he doesn't even know उसके अंदर है क्या, other than his photographs. All trash going on. ठीक है अजीत, एसीसी वाला है, तू आजा हमारे पास. ऐश्वर्या, sir, please tell if not participating in co-curricular, not being good in academy, what are अरे academic भी अच्छा नहीं है, co-curricular भी नहीं कर रही है, तो ऐश्वर्या फिर तो chances मुश्किल ही है. Just by having a name as Aishwarya Rai, who I used to admire a lot, will not help you. You'll have to be good at things. ठीक है बच्चे? Yeah, Buttercup. I recently came across reports stating that attractive individuals tend to have better chances of being selected. No, it might be. This might be. But we are not looking for appearances and all that. ठीक है ना? बीइंग अ सेलेक्टर, हम शक्ल देख के थोड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं लोग को यार, उनका कॉम्पिटेंस देखते हैं. शक्ल देख के सेलेक्ट करना होता तो फिर इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना था? ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह खड़ा करा देते लोग. नो नो, वी डोंट डू ऑल दैट. How can one introspect herself, Priya? I found difficulty in it, like different mention and all that. अरे हमारा किताब पढ़ो. Who am I? मैंने एक उसमें ऐसे लिखा है, उसको पढ़ो, उससे तुमको क्लैरिटी मिलेगा. You will be able to get an idea about making, having a self-assessment. And still gray areas may remain. I may have so many gray areas about my own self. I would be having biases. कितनी होंगी जो मेरे को नहीं पता है. Bias होती वो है जो खुद को नहीं पता होता. So those things are part of life, part of reality. We can't be perfect. पर इस तरह से आप कर सकते हैं. और बाकी और क्लैरिटी के लिए हमारा पास आ जाइए गाइडेंस प्रोग्राम में. I'll be able to assess and give you a roadmap for improvement. ठीक है? Thank you. रोटेटर कफ ऑफ का यार भाई मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास मेडिकल की जानकारी खास है नहीं. टेकन 1 year ड्रॉप व्हाट. नहीं, यू डोंट बॉदर. आईयू क्या पूछेगा? सो लॉन्ग एज व्हाट यू डन, यू नॉट वेस्टेड टाइम, इट इज ओके. एंड इवन इफ यू हैव वेस्टेड टाइम, then you learned a lesson now and you stopped wasting time, then also it will be okay. That should be your outlook. Don't not that कि उसको क्वेश्चन को जवाब कैसे काउंटर करना. Don't get to do.
सर ब्रेन वॉश सोसाइटी से कैसे बचे? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। यू कैन ओनली कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शंस, अजीत जी। आप अपने विचार ठीक रखिए, अपने एक्शन ठीक रखिए, उससे ही इनडायरेक्टली आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे एंड जिनसे बातचीत करेंगे, दैट्स ऑल। आप किसी को वो नहीं कर सकते। जो हो रहा है वो हो रहा है। पीपल विल टेक देयर ओन डिसीजन बिकॉज सबके पास अपना अपना दिमाग है। ठीक, तो दैट्स व्हाट इट इज। या आपकी इकोनॉमिक्स में इजी बुक नहीं मिल रही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो सर। अच्छा, WhatsApp me on. I'll share with you number for any queries. ऐश्वर्या इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि स्पोर्ट्स और इंटर्नशिप की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई। भैया देखो, उसे कोई ये प्ली नहीं चलती है। तुम ऐश्वर्या जी आ जाओ हमारा गाइडेंस प्रोग्राम में। आई एम फैन ऑफ ऐश्वर्या राय। तेरे को डिस्काउंट भी दे दूंगा ऐश्वर्या नाम का। हाँ, फाइन। तो देन वी विल सॉर्ट आउट। बाकी डोंट एक्सपेक्ट एनी यू नो किड ग्लव हैंडलिंग फ्रॉम मी जस्ट बिकॉज़ योर नेम इज ऐश्वर्या। ठीक है। हाँ, तो काम तुमको करना पड़ेगा। Swastik Sharma. In my last research in a picture, there was a person falling from somewhere, but some cadet tried to make a positive out of that, and I made a story or rescue and all that. अरे तुमने ठीक किया यार, कोई गिर रहा है तो किसी को बचाना पड़ेगा ना उसको। ऐसे ही वे फ्रॉड पॉजिटिव सॉर्टिव करने के चक्कर में मत पड़ो, बेवकूफी है। डोंट डू दैट। सर टीएटी स्टोरीज आर नॉट इम्प्रूविंग। अरे भाई, मैंने बुक में लिखा है, पूरा कहानी में लिखने के बारे में समझाया, सैंपल डाले, हमने वीडियो भी डाले कितने स्टोरीज के। मेरे स्टूडेंट लाते हैं तो सैंपल हम डिस्कस करते हैं। इन्हें नहीं कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। तू अगर फंस रहा है तो तू आ जा मेरे पास। है थोड़ा डांट वांट खाएगा तो सुधर जाएगा। ठीक है क्या? थैंक यू सर। आई एम पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन बट इज यूज्ड टू क्रिटिसाइज्ड मोस्ट। डज इट अफेक्ट माय? नो, डजंट अफेक्ट यार। सच सच बोलो जो है। ठीक, डोंट बॉदर। योगी दीदी, हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट I फॉर have provided. डिस्काउंट? I have provided. अजीत को तो पक्का मिलेगा डिस्काउंट। That you being mechanical है, you're working as a low level job as a data specialist, how do I answer? अरे जो बोलो बोलो, सच्ची बात बोलो भैया। जॉब वो करते हैं जो हमको मिलता है। ठीक है ना? यू डोंट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, सोसाइटी डिसाइड्स की सूटेबिलिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स के जॉब कम हो गए, तो दैट्स अ रियलिटी। डोंट गेट हैसल्ड बाय ऑल दिस। ऐश्वर्या ने मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया। अरे ऐश्वर्या घबरा मत यार, जो है बोल खुल के। गौरव राणा, मैं सेकंड ईयर कॉलेज है, 1.5 year फॉर माय कॉलेज आंसर। मैं क्या अभी से आपके साथ जुड़ सकता हूँ? या मोस्ट वेलकम, अर्लियर द बेटर, इट विल हेल्प यू डेवलप वेल। वेलकम, थैंक यू पारुल। I have a problem that whenever I try to assert my opinion or views in front of friends or other people, they start considering me as rude or arrogant guy. Don't get bothered. So long as you're talking correctly, there is no problem. लोगों का consider करना ठीक है। मैं फैन भगत सिंह दा। I don't know or interested in government policies, but should not interfere much in army policy. It will go to repeat 62 again if you guys will not. नहीं, your point is valid. Your fear is valid. With this Agnipath scheme and all that, our security situation will be adversely affected, and it can have long-term serious repercussions, which Gobarbucks don't realize, and this government is not bothered. Silas Kardi, sir, I keep in touch with you after clearing CDS AFCAT or keep following you from now on? It's your choice, buddy. आप डिसाइड करिए कैसे आपकी बात बनती है, what suits you. ठीक है? God bless. So I want to enroll for your course, but बात SSB तक पहुंच ही नहीं, रिटर्न में ही तो फेल हो जाता हूँ। तो आ जा पहले, तेरे को जिंदगी में क्या करने का कुछ एडवाइस देंगे। समथिंग विल ट्राई एंड वर्क आउट। फाइन, ठीक है, आ जाओ। कम शुभम, वेलकम। दैट्स इट। मेरठ में कैसे कांटेक्ट करें? आई लिव इन मेरठ ओनली।
मेरठ Okay. में है यार। मैं इधर पल्स All जिम में right. रहता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सेंट जॉन स्कूल के सामने रहता हूँ। यू कैन कैच मी एनी टाइम। मैं कहीं छुपा हुआ नहीं हूँ। ठीक है हिमांशु? How can we join? Priya, you can get in touch with Yogita madam, that number given on our website. ठीक है? That's it. हाँ हिमांशु, okay, मिलेंगे फिर। That's it. Yes, sir. Okay then, thanks all of you for attending our session and asking a lot of questions. I hope I have been able to answer you people adequately. Take care all of you. God bless.